Hello students, welcome all of you. In this video, we will derive Laue equations for diffraction of X-rays from crystals and to obtain Bragg's law from Laue equations, a very important topic in solid state physics for B.Sc Part 3 Physics Honors and Physics General courses. This video is lecture number 5 of solid state physics. First of all, we will derive Laue equations for diffraction of X-rays from crystals. Laue equations illustrate effectively the way in which X-rays are scattered from different atoms of a crystal combine for the formation of a diffracted beam. Laue equations यह जानकारी देता है कि किस ढंग से एक्सरेज बीम किसी क्रिस्टल के डिफरेंट एटम्स से स्कैटर्ड होने के बाद कंबाइन होकर डिफ्रैक्टेड बीम का फॉर्मेशन करते हैं. To derive Laue equations, suppose two identical scattering centers located at the lattice points P1 and P2 of a three-dimensional crystal lattice, which are separated by a small r vector. Laue इक्वेशंस को डिराइव करने के लिए सपोज किया जाए कि थ्री डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस में किसी थ्री डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस में दो स्कैटरिंग सेंटर्स हैं, टू स्कैटरिंग सेंटर्स हैं जो कि टू लैटिस पॉइंट्स P1 एंड P2 पर सिचुएटेड हैं, जिनके बीच का सेपरेशन स्मॉल r वेक्टर से रिप्रेजेंट किया जाता है. दैट इज स्मॉल r वेक्टर इज द डिस्प्लेसमेंट बिटवीन टू लैटिस पॉइंट्स P1 and P2. Again, suppose a parallel beam of X-rays, that is incident X-rays beam is incident on both lattice points P1 and P2 respectively along the direction of unit vector I cap. The scattered beam from both lattice points P1 and P2. The scattered beam is also parallel and travel along the unit vector S cap, a small s cap, in any arbitrary direction, which is shown in figure 1. सपोज किया जाए कि पैरेलल एक्सरे बीम जो यूनिट वेक्टर आई कैप के लॉन्ग ट्रेवल करते हैं, बोथ लैटिस पॉइंट्स, दोनों लैटिस पॉइंट्स P1 एंड P2 पर इंसिडेंट होते हैं. इंसिडेंट होने के बाद बोथ लैटिस पॉइंट्स P1 एंड P2 के द्वारा जो कि क्रिस्टल के लैटिस पॉइंट्स हैं,
जो कि जहां पर कि स्कैटरिंग सेंटर्स हैं, दोनों लैटिस पॉइंट्स स्कैटरिंग सेंटर के रूप में वर्क करते हैं। हमने शुरू में ही सपोज किया है। तो स्कैटर्ड होने के बाद स्कैटर्ड बीम एस्केप के डायरेक्शन में, यूनिट वेक्टर एस्केप के डायरेक्शन के अलॉन्ग ट्रेवल करते हैं, लेकिन पैरेलल बीम के रूप में ही ट्रेवल करते हैं। नाउ लेट थीटा बी द एंगल विच द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट एक्सरे बीम मेक्स विद द रिफ्लेक्टिंग प्लेन। सपोज किया जाए कि थीटा वह एंगल है जिसे इंसिडेंट एक्सरेज बीम, आपतित होने वाला एक्सरेज बीम रिफ्लेक्टिंग प्लेन से P1 पॉइंट से पास होने वाला जो हॉरिजॉन्टल प्लेन फिगर 1 में रिप्रेजेंट किया गया है वह रिफ्लेक्टिंग प्लेन है। तो सपोज किया जाए कि इंसिडेंट एक्सरेज बीम P1 पॉइंट, लैटिस पॉइंट P1 से पास करने वाले रिफ्लेक्टिंग प्लेन से थीटा एंगल फॉर्म करता है। इसलिए स्कैटर्ड एक्सरेज बीम भी रिफ्लेक्टिंग प्लेन से थीटा एंगल ही फॉर्म करेगा। दैट इज द angle at which a scattered X-ray beam that is the scattered X-ray beam will also travel at angle theta to the refracting plane. That is reflected scattered X-ray beam will also form angle theta to the reflecting plane from the reflecting plane. क्योंकि इंसिडेंट एक्सरे बीम रिफ्लेक्टिंग प्लेन से जो कि P1 पॉइंट से लैटिस पॉइंट P1 से पास करता है, तो इंसिडेंट एक्सरे बीम चूंकि थीटा एंगल फॉर्म करता है, इसलिए हमने सपोज किया है, इसलिए स्कैटर्ड एक्सरे बीम भी रिफ्लेक्टिंग प्लेन से थीटा एंगल ही फॉर्म करेगा। नाउ ड्रॉन परपेंडिकुलर्स P1A फ्रॉम द लैटिस पॉइंट P1 to P1 on the direction of incident beam and P2B from the another lattice point on the direction of a scattered X-ray beam. Therefore, P1A and P2B will be the incident wave front and a scattered wave front respectively. और P2A will be the projection of a small arc vector along the direction of incident beam, while P1B will be the projection of a small arc vector along the scattered X-ray beam direction. P1 पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉन किया गया P1A इंसिडेंट एक्सरे बीम के डायरेक्शन पर, जबकि P2 मतलब अनदर लैटिस पॉइंट, सेकेंड लैटिस पॉइंट P2 से P2B परपेंडिकुलर ड्रॉन किया गया स्कैटर्ड एक्सरे बीम के डायरेक्शन पर। इसलिए P1A इंसिडेंट वेव फ्रंट होगा, जबकि P2B स्कैटर्ड वेव फ्रंट होगा। या P2A को आर वेक्टर, स्मॉल आर वेक्टर, जो कि डिस्प्लेसमेंट है P1 बोथ लैटिस पॉइंट्स P1 एंड P2 के बीच का, तो P2A स्मॉल आर वेक्टर का
प्रोजेक्शन होगा इंसिडेंट एक्सरे बीम के डायरेक्शन के लॉन्ग, जबकि P1B स्मॉल आर वेक्टर का प्रोजेक्शन होगा स्कैटर्ड बीम के डायरेक्शन के लॉन्ग. Now suppose CD is the normal or perpendicular drawn on the reflecting plane, which is represented by capital S vector, and it is equal to the difference between I cap minus S cap unit vectors using the triangle law of vector addition. In this triangle PCD. So angle between the direction of incident X-ray beam and a scattered X-ray beam will be equal to theta. This angle will theta from the geometry, opposite vertically opposite angle, and this will be also theta. Initially we have taken. So the angle between the direction of incident X-ray beam along P1D and along the scattered X-ray beam, that is along P1C, is theta plus theta, that is 2 theta. So magnitude of S vector is given by 2 sin theta. Mod of S vector, that is S vector is the perpendicular distance, S is the perpendicular drawn, that is perpendicular distance, that is perpendicular drawn on the reflecting plane. This is the normal. So magnitude of S vector we will obtain will be equal to 2 sin theta using the law of vector addition. Now the part difference between two scattered X-ray beam scattered from two lattice points P1 and P2 is given by P2A minus P1B. So write down CD represents the perpendicular distance between the direction of incident X-ray beam and a scattered X-ray beam, and CD is the normal to the reflecting plane. So, and CD is represented by S vector from C to D. So S vector equals to, that is perpendicular distance normal through the reflecting plane, is S vector is equal to I cap minus S cap. I cap is the unit vector along the incident X-ray beam direction, and S cap is the unit vector along the scattered X-ray beam direction. Mod of S is given by mod of S vector is given by, it is given by 2 sin theta. So it is 2 sin theta using the law of vector addition. Using the triangle law of vector addition, we can obtain it. Mod of S vector equals to 2 sin theta. Now part difference between the two diffracted X-ray beam is P2A minus P1B.
So path difference between two, the direction of two scattered beam, two scattered X-ray beams scattered from two lattice points P1 and P2. दोनों लैटिस पॉइंट्स P1 एंड P2 से स्कैटर्ड होने वाले, जो कि एक पैरेलल बीम ऑफ पैरेलल स्कैटर्ड एक्सरे बीम्स हैं, तो उनके बीच का पाथ डिफरेंस कितना होगा? P2A माइनस P1B। और पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए ही हम लोगों ने P1 पॉइंट से इंसिडेंट एक्सरे बीम के डायरेक्शन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था P1A, एंड P2 पॉइंट से स्कैटर्ड एक्सरे बीम के डायरेक्शन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है इस फिगर में, फिगर 1 में P2B। सो पाथ डिफरेंस बिटवीन द टू scattered X-ray beam from the lattice points P1 and P2 is given by P2A minus P1B. P2A is the projection of R vector along the incident X-ray beam direction. Therefore, P2A can be written as R vector dot I cap, and P1B is the projection of R vector, that is displacement between 2 points P1 and P2. So P1B is the projection of R vector along P1B. That means P1B represents the projection of R vector along the scattered beam direction, that is along P1B, while P2A is the projection of R vector along the direction of incident X-ray beam. Therefore, P2A is R vector dot I cap, क्योंकि इंसिडेंट बीम का जो डायरेक्शन है उसके अलॉन्ग यूनिट वेक्टर I cap से रिप्रेजेंट किया गया है। Therefore, P2A is equal to R vector dot I cap minus P1B, क्योंकि P1B रिप्रेजेंट किया गया है स्कैटर्ड यूनिट वेक्टर, दैट इज स्कैटर्ड बीम का डायरेक्शन है P1B, जो कि एक्सरे बीम जो लैटिस पॉइंट P1 से स्कैटर्ड हुआ है, तो उसके डायरेक्शन के लॉन्ग स्कैटर्ड एक्सरे बीम के डायरेक्शन के लॉन्ग यूनिट वेक्टर स्कैप है। सो P1B can be written as R vector dot a small escape. A small escape is the unit vector along the scattered beam direction. Escape unit vector है, a small escape unit vector है scattered X-ray beam के डायरेक्शन में। Therefore, path difference between two scattered beams from the lattice points P1 and P2 is, we can write R is common, a small r vector is common, so R dot under bracket I cap minus S cap, and suppose it is mod of S vector is 2 sin theta, suppose it is equation number 1, and path difference between two scattered X-ray beam is R vector dot under bracket I cap minus S cap, and it is I cap minus S cap is S vector, capital S vector, which we have already taken. So we can write it as a small r, path difference between two scattered X-ray beams is R vector dot difference I cap minus S cap is capital S vector, which is the perpendicular distance through the reflecting plane. So this is capital S vector, and mod of capital S vector, that is we can obtain using the
triangle of vector addition 2 sin theta. We know the relation between phase difference between two waves, that is phi, and its corresponding part difference delta is given by phi equals to 2 pi by lambda into part difference delta. हम लोग टू वेव्स के बीच में फेज डिफरेंस फाई तथा उसके संगत पार्ट डिफरेंस डेल्टा के बीच में रिलेशन जानते हैं. फाई इक्वल्स टू 2 पाई बाई लैम्डा इंटू पार्ट डिफरेंस डेल्टा. इसलिए उस रिलेशन का अब यूज करेंगे इस केस में. सो फेज डिफरेंस बिटवीन द वेव्स स्कैटर्ड एट द लैटिस पॉइंट्स, टू लैटिस पॉइंट्स P1 and P2 is phase difference phi equals to 2 pi by lambda into part difference, that is delta. Part difference is denoted by the symbol delta, and we have 2 pi by lambda multiplied by delta, part difference between two scattered waves from points P1 and P2 is part difference is equal to r vector dot capital S vector. Capital S vector is represented by CD vector, which is also a vector normal to the reflecting plane passing through point P1. तो S vector भी CD vector के द्वारा रिप्रेजेंटेड है, जो कि लैटिस पॉइंट P1 से पास होने वाले रिफ्लेक्टिंग प्लेन पर नॉर्मल है, परपेंडिकुलर है, जिसका वैल्यू S वेक्टर का वैल्यू ट्रायंगल लॉ से ऑब्टेन किया जा सकता है I कैप माइनस S कैप. सो फेज डिफरेंस फाई, फेज डिफरेंस बिटवीन the waves scattered at the two lattice points P1 and P2. यह फेज डिफरेंस का एक्सप्रेशन हमने लिखा है, फाई इक्वल्स टू यूज किया है, फाई इक्वल टू फेज डिफरेंस फाई इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा इनटू पार्ट डिफरेंस. यह फेज डिफरेंस टू लैटिस पॉइंट्स P1 and P2 से स्कैटर्ड होने वाले पैरेलल स्कैटर्ड बीम्स, एक्सरे बीम्स के लिए. सो फेज डिफरेंस बिटवीन द वेव्स स्कैटर्ड एट द टू लैटिस पॉइंट्स P1 and P2 इज फाई इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा इनटू पार्ट डिफरेंस यूजिंग द रिलेशन, एंड इट इज 2 पाई बाई लैम्डा एंड पार्ट डिफरेंस बिटवीन टू स्कैटर्ड X-ray beams from P1 and P2, lattice points P1 and P2, we have already obtained in equation 2. It is r, a small r vector dot capital S vector. So it is 2 pi by lambda under bracket a small r vector dot capital S vector, and suppose it is equation number 3, where mod of capital S vector is 2 sin theta. Theta is the angle which the incident X-ray beam makes with the reflecting plane. थीटा वह एंगल है जिसे इंसिडेंट एक्सरे बीम का डायरेक्शन रिफ्लेक्टिंग प्लेन से फॉर्म करता है. दिस एंगल इज थीटा, जिसे फिगर 1 में रिप्रेजेंट भी किया गया है. नाउ सपोज a small a vector, a small b vector and a small c vector are the three primitive lattice vectors of point P2, that is the second lattice point P2 with respect to the first lattice point P1. Then a small r vector can be written as a small a vector plus a small b vector plus a small c vector, because it is a three-dimensional crystal lattice. We have already supposed it initially. हम लोगों ने शुरू में ही सपोज किया है कि क्रिस्टल लैटिस कैसा है, थ्री डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस है. तो ए वेक्टर, स्मॉल ए वेक्टर, यदि स्मॉल ए वेक्टर, स्मॉल बी वेक्टर, स्मॉल सी वेक्टर थ्री प्रिमिटिव लैटिस वेक्टर्स हैं. पॉइंट सेकेंड लैटिस पॉइंट P2 का फर्स्ट लैटिस पॉइंट P1 के रिस्पेक्ट में, तो वी कैन राइट आर वेक्टर एज अ स्मॉल आर वेक्टर एज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, वेयर a small a vector, a small b vector and a small c vector are three primitive
lattice vectors of the lattice point P2, second lattice point of the lattice point P2 with respect to the first lattice point P1. So A vector, B vector and C vector are the three primitive lattice vectors of point P2, that is second lattice point P2 relative to with respect to first lattice point P1. So equation 3, that is the relation for or equation for phase difference phi between two scattered X-ray beam can be written as separately for all three primitive lattice vectors A vector, B vector and C vectors. तो इक्वेशन 3 को जो कि फेज डिफरेंस का इक्वेशन है टू फेज डिफरेंस टू स्कैटर्ड एक्सरेज बीम टू स्कैटर्ड पैरेलल एक्सरेज बीम्स फ्रॉम पॉइंट्स P1 एंड P2 उनके बीच में फेज डिफरेंस का इक्वेशन फाइव इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा मल्टीप्लाइड बाई स्मॉल आर पार्ट डिफरेंस इज स्मॉल आर वेक्टर डॉट कैपिटल एस वेक्टर. अब जब हमने स्मॉल ए वेक्टर, स्मॉल बी वेक्टर एंड स्मॉल सी वेक्टर थ्री प्रिमिटिव लैटिस वेक्टर्स पॉइंट P2 का लैटिस पॉइंट P2 का सपोज किया है विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट फर्स्ट लैटिस पॉइंट P1, तो इस पार्ट डिफरेंस के इक्वेशन 3 को हम सेपरेटली ऑल थ्री प्रिमिटिव लैटिस वेक्टर्स ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर के लिए एक्सप्रेस कर सकते हैं. सो इक्वेशन 3 can be expressed as phi A, that is phase difference for the primitive lattice vector A is phi A equals to 2 pi upon lambda multiplied by, in place of r vector, now we can replace it r vector, small r vector as a small a vector, first primitive lattice vector, so A vector dot S vector. We know that phase difference phi can also be expressed as 2 pi multiplied by some integer. If the scattered wave direction is taken to be in the direction of diffraction maxima, यदि scattered wave का जो डायरेक्शन है जिसके लॉन्ग यूनिट वेक्टर एस वेक्टर स्मॉल एस वेक्टर है, तो उस डायरेक्शन को हम अगर डिफ्रैक्शन मैक्सिमा के लॉन्ग सपोज करें तो फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई मल्टीप्लाइड बाय एन इंटीजर एंड लेट दैट इंटीजर इज एच डैश. इन नेक्स्ट केस फॉर लैटिस वेक्टर बी, small b vector, we can take it as that integer as k dash, and for the third primitive lattice vector c vector, we can take it as that integer as l dash. If h is the common factor, then we can write h dash is equal to n into h, k dash is equal to n into k, and l dash is equal to n into l. So formula for phase difference is, if the scattered wave direction is taken in the direction of diffraction maxima, phase difference is equal to 2 pi multiplied by an integer. So we can also write phase difference for phase difference between two scattered waves from lattice points P1 and P2. For lattice vector, primitive lattice vector A vector is phi A equal to 2 pi by lambda into part difference, that is A vector dot S vector. हमने r वेक्टर को रिप्लेस कर दिया है a वेक्टर से प्रिमिटिव लैटिस वेक्टर a के लिए. एंड फेज डिफरेंस अगर स्कैटर्ड वेव का जो डायरेक्शन है उसके लॉन्ग उसको हम सपोज कर लेते हैं डिफ्रैक्शन मैक्सिमा के लॉन्ग, तो फेज डिफरेंस बराबर होता है phi इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा इनटू एन इंटीजर. सो वी कैन राइट फेज डिफरेंस, दिस कैन बी आल्सो रिटन एज 2 पाई मल्टीप्लाइड बाय एन इंटीजर, सपोज दैट इंटीजर इज h dash, and this can be written as 2 pi multiplied by h dash can be written as a small n into h. Let a small n into h is equal to h dash, where n is a small n is a common factor, जो कि हम all three primitive vectors के लिए यूज करेंगे, एक a वेक्टर के लिए, b वेक्टर के लिए एंड
सी वेक्टर के लिए इंटीजर के रूप में, तो इंटीग्रल वैल्यू के रूप में. सो फाई इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा ए वेक्टर डॉट एस वेक्टर इक्वल्स टू 2 पाई एन इंटू एच. सपोज इट इज इक्वेशन नंबर 4 एंड फाई बी phase difference between two scattered X-ray beams for primitive lattice vector B phi B equal to 2 pi by lambda multiplied by, now in equation 3, r vector, a small r vector, which is the displacement between two lattice points P1 and P2, can be replaced by a small b vector for the second primitive lattice vector. So phi B, that is phase difference between two scattered X-ray beams for the primitive lattice vector B phi B equal to 2 pi by lambda multiplied by B vector. In place of R vector, we can replace a small b vector dot S vector equals to 2 pi, and it is also equal to, this phase difference will also equal to 2 pi multiplied by an integer if the scattered wave direction is taken to be in the direction of diffraction maxima. अगर scattered wave के डायरेक्शन को डिफ्रैक्शन मैक्सिमा के डायरेक्शन के अलोंग सपोज किया जाए तो फेज डिफरेंस इक्वल टू 2 पाई इंटू एन इंटीजर होता है, हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं. तो 2 पाई इंटू एन इंटीजर, सपोज के डैश, एंड के डैश कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ एन. एन इज ए कॉमन फैक्टर देन विच इज ऑल्सो एन इंटीजर, सो इट इज के डैश इक्वल टू एन इंटू के. के डैश की जगह हमने एन इंटू के, एन एक कॉमन फैक्टर है स्मॉल एन, इसलिए हमने उसे इक्वेशन 4 में यूज किया है. ए के लिए भी प्रिमिटिव लैटिस वेक्टर, ए के ए वेक्टर के लिए भी, बी के लिए भी फेज डिफरेंस के केस में, और एंड सी के लिए. सिमिलरली फॉर फेज डिफरेंस बिटवीन टू स्कैटर्ड एक्स-रेज बीम्स फॉर प्रिमिटिव लैटिस वेक्टर सी वेक्टर इज फाई सी इक्वल्स टू 2 पाई बाई लैम्डा मल्टीप्लाइड बाई, नाउ बी वेक्टर इज रिप्लेस्ड बाई सी वेक्टर, दैट इज इन इक्वेशन 3. इन प्लेस ऑफ स्मॉल आर वेक्टर वी कैन रिप्लेस इट बाई सी वेक्टर. इक्वेशन 3 में आर वेक्टर के बदले में प्रिमिटिव लैटिस वेक्टर सी वेक्टर के लिए फेज डिफरेंस टू स्कैटर्ड एक्स-रे बीम्स के बीच में हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो आर वेक्टर की जगह सी वेक्टर यूज किया जाएगा. इट इज सी वेक्टर मल्टीप्लाइड बाई कैपिटल एस वेक्टर इक्वल्स टू, दिस इज इक्वल टू, एंड इट इज अगेन फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई multiplied by L dash, and we can write it as 2 pi multiplied by NK, NL, where L dash is equal to a small n into L, where n is the common factor. इसलिए हमने n को यूज किया है. All three equations 4, 5, and suppose it is equation 6, that is phase difference between two scattered waves, two scattered X-ray beams for the primitive lattice vector C. Now A vector dot S vector using the formula of that dot product can be written as mod A mod S into cos alpha, where alpha is a direction cosine, is the angle with the normal to the reflection, normal to the reflection plane, reflecting plane. So let alpha, beta and gamma be the angles with the normal to the reflection plane passing through point P1, and the direction of primitive lattice vectors. So suppose there are three primitive lattice vectors, A vector, a small b vector, and C vector, makes angle alpha, beta and gamma respectively with the normal to the reflecting plane, which is a CD vector, that is a capital S vector. So alpha, beta and gamma, three primitive lattice vectors रिफ्लेक्टिंग प्लेन के नॉर्मल के साथ एंगल्स फॉर्म करते हैं, जिसे हमने सपोज किया है. देन ए वेक्टर डॉट एस वेक्टर कैन बी रिटन एज mod of A vector mod of S vector into cos alpha, but mod of S vector we have already obtained it. Mod of S vector is 2 sin theta. So in place of A vector dot S vector we can write mod of A vector mod of S vector into cos alpha. B vector dot S vector can be written as mod of B vector mod of S vector into cos beta, and C vector dot S vector
is equal to mod of C vector mod of S vector into cos gamma using the formula of a scalar product of two vectors. So now using the scalar product of two vectors, we can write equations 4, 5 and 6 as. First of all, equation 4 can be written as phi a equals to 2 pi by lambda into mod of a vector, mod of s vector, mod of a vector, mod of s vector into cos alpha. Cos alpha is the direction cosine equals to 2 pi into nh. Therefore, since phi a equals to phase difference between two scattered beams, X-ray beams from two lattice points P1 and P2. This is phi. This is phase difference phi a for lattice vector a, and this is also equal to 2 pi into the integral 2 pi multiplied by an integer. So both are equal to phi. So we can write equation 4 as only phi a लिखने की जरूरत नहीं है. Phi a equals to 2 pi by lambda multiplied by a vector dot s vector and it is equal to 2 pi into h dash बराबर 2 pi ns. तो केवल हम now we can write equation 4 as 2 pi by lambda a vector dot s vector equals to 2 pi into nh. Equation 5 as 2 pi by lambda that is 5 is equal to 2 pi by lambda b vector dot s vector is equal to 2 pi into n cap. So we can only write 2 pi by lambda b vector dot s vector is equal to 2 pi n k, and equation 6 as 2 pi by lambda into c vector dot s vector equals to 2 pi into nl. So equation 4 is written as 2 pi by lambda using the formula of a scalar product of two vectors. A vector dot s vector is mod of a vector mod of s vector into cos alpha equals to 2 pi nh, and 2 pi and 2 pi will cancel out, and it will be equal to, and mod of s is equal to, or mod a vector is equal to a only, and mod of s vector is 2 sin theta. So it is 2 sin theta into cos alpha equals to n h into h multiplied by lambda, that is h into n lambda, h into n lambda, that is 2a sin theta into cos alpha, or therefore we get 2a cos alpha into sin theta equals to n h into lambda, and suppose it is equation number 7, and this is the one of the Laue equations. This is one of the Laue equation, that is 2a sin theta into cos alpha, or 2a cos alpha into sin theta is equal to nh lambda. Similarly, from equations 5 and 6, we can obtain other two Laue equations as which can be 2b sin theta cos beta equals to nk lambda, and from equation 6 we can obtain the third Laue equation as 2c sin theta cos gamma, or 2c cos gamma into sin theta is equal to nl lambda. But first Laue equation is 2a sin theta into cos alpha equals to nh lambda. Similarly, from equations 5 and 6, using the formula of a scalar product of two vectors, b vector dot s vector and c vector and s vector, and putting the value of mod s vector. Mod s vector is the s vector is the s vector is also a vector which is perpendicular to the reflecting plane passing through point P1. So this is the equation 7 represents first Laue equation. Similarly from equations 4 and 5, using the formula of a scalar product of two vectors and putting the values of mod of s vector, capital S vector, equals to 2 sin theta, we can obtain another two Laue equations. As as 2a sin theta
multiplied by cos beta equals to n k into lambda, and suppose this is 7b. First equation 2a cos, first Laue equation 2a cos, 2s cos alpha into sin theta, or 2s sin theta into cos alpha equals to nh lambda. Suppose it is equation number 7a, and from equation, this is obtained from equation number 4, and from equation number 5 we can obtain 2a sin theta into cos beta is equal to nk lambda. Suppose it is equation number 7a, और यह obtained हुआ किससे? From equation 5, from equation 5, and from equation 6, which is phi c, that is phase difference between two scattered X-ray beams for primitive lattice vector C vector, as phi c is equal to 2 pi by lambda into under brackets C vector dot S vector is equal to 2 pi into an integer which is L dash, and it can be written n into L. So equation 6, from equation 6 we can obtain the final and the last final and the final or the last Laue equation as 2a sin theta into cos gamma equals to n L, small l, into lambda, and it is equation number 7c. It is 7c, which is obtained from equation 6, and from equation 5 we have obtained 2a, second Laue equation, as 2a sin theta into cos beta is equal to nk lambda. Suppose it is equation number 7b. It is obtained from equation 5, and equation 6 we have obtained 2a sin theta cos gamma is equal to nl lambda. So these are 7a, equation 7a, 7b and 7c represent three Laue equations for diffraction of X-rays from crystals. So equations 7a, 7b and 7c represent Laue equations for diffraction of X-rays from crystals. Now we can obtain Bragg's law from these Laue equations given by equation 7a, 7b and 7c. From the Laue equations, it is clear that from equation 7a, it is clear that cos alpha is directly proportional to h by a. From 7b, it is clear that cos beta, direction cosine, another direction cosine, cos beta is directly proportional to lambda by b. Lambda by b. Here we can for primitive lattice vector A we have written a vector A, mod of a vector is A. For primitive lattice vector B we can write in equation 7b as 2b in place of A, and equation 6 for primitive lattice vector C vector we can write mod of C vector is 2c. So यहाँ करेक्शन है इक्वेशन 7b में, जो कि प्रिमिटिव लैटिस वेक्टर बी वेक्टर के लिए है, तो वहां पर a की जगह b यूज करना है, 2b sin थीटा cos बीटा इज इक्वल टू nk lambda. This is 7b, second Laue equation, and from equation 6 we have obtained 2 in place of a we have to write c, mod of c vector is equal to c for the third primitive lattice vector, 2c sin theta cos gamma is equal to nl lambda. So is correction these are the corrections in equation 7b and 7c, that is second Laue equation and third Laue equation. So equation 7a, 7b and 7c represent Laue equation. Now Bragg's law, we have to obtain Bragg's law from Laue equations given by 7a, 7b and 7c. So from Laue equations it is clear that direction cosines, cos alpha, cos beta and cos gamma, where alpha, beta and gamma
are the angles which the three primitive lattice vectors a vector, a small v vector, and a small c vector makes with the normal to the perpendicular to the reflecting plane. So from Laue equations we have, that is from 7a 7b, equation 7a 7b and 7c. From Laue equations we have, from 7a it is clear that cos alpha is directly proportional to h upon a. Cos beta, from 7b it is clear that cos beta is directly proportional to h by b, and cos gamma is directly proportional to h by c, h upon c. These are which we have obtained from three Laue equations, that is from 7a, 7b and 7c. So we have obtained the information that cos alpha varies as h by a, cos beta varies as h by b, cos gamma varies as h by c. L by cos alpha varies as h by a, cos beta varies as L by b. It is L by b, and cos gamma varies as cos beta varies as k by b, and cos gamma varies as L upon c. In equation 7c it is n L lambda. In equation 7b it is n k lambda. So in equation 7a, in first Laue equation it is n h lambda. So from 7a it is clear that cos alpha is directly proportional to h upon a. a को डिनोमिनेटर में ले आएगा, 2a को डिनोमिनेटर में ला देंगे, n लैम्डा क्या है, 2n लैम्डा क्या है, कांस्टेंट है, तो इसलिए cos अल्फा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, h अपॉन a के, h अपॉन स्मॉल a. स्मॉल a इज द मैग्नीट्यूड ऑफ primitive lattice vector a vector. And from 7b we have obtained that it is clear that cos beta varies as another direction cosine, cos beta varies as k by k upon b, b को डिनोमिनेटर में ले आएंगे. अदर क्वांटिटीज, अदर टर्म्स इस इक्वेशन में कांस्टेंट है, तो उसको वेरी एज के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं. एंड cos गामा फ्रॉम द थर्ड Laue equations, third Laue equation, it is clear that cos gamma directly proportional to L upon C, where H, K and L forms, these are three integers form HKL planes, form HKL plane. H dash, K dash and L dash were taken as three integers, and if n, small n is the common factor, then H dash is equal to n into H, K dash is equal to n into K, and L dash is equal to n dash is equal to n into L. So H, K and L are also three integers, and they form HKL planes. HKL plane. H, K and L, three integers, HKL plane का formation करते हैं. So from Laue equation we have obtained cos alpha. We get the information cos alpha varies as h by a, cos beta varies as k upon b, and cos gamma varies as L upon c. That is the direction cosines cos alpha, cos beta and cos gamma. Direction cosines of the normal s vector जो normal है उसका जो direction cosines है, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द नॉर्मल एस वेक्टर किसके प्रोपोर्शनल है, h by a के, k by b के एंड l by c के. Hence it is clear that s vector, that is this s vector which is represented by cd vector, is normal to the family of HKL planes. इससे चूंकि डायरेक्शन कोसाइंस नॉर्मल एस वेक्टर का जो डायरेक्शन कोसाइंस है cos अल्फा ए वेक्टर एच वेक्टर ए, चूंकि ए वेक्टर प्रिमिटिव लैटिस वेक्टर ए वेक्टर एस वेक्टर के साथ नॉर्मल के साथ
नॉर्मल वेक्टर एस कैपिटल एस वेक्टर के साथ जो एंगल फॉर्म करता है कितना है, अल्फा है। फिर प्रिमिटिव लैटिस वेक्टर बी वेक्टर फॉर्म करता है एस वेक्टर के साथ, नॉर्मल वेक्टर के साथ एस वेक्टर के साथ एंगल वह बीटा है। एंड प्रिमिटिव लैटिस वेक्टर सी वेक्टर एंगल फॉर्म करता है नॉर्मल वेक्टर एस वेक्टर के साथ, सी डी वेक्टर के साथ। वो एंगल कितना है, वो एंगल गामा। सो अल्फा बीटा एंड गामा बी द एंगल्स with the normal to the refracting plane through P1 and the direction of primitive lattice vectors A vector, B vector and C vector. So it is clear that direction cosines of the normal, that is S vector, direction cosines of the S vector is S vector are proportional to h by a, cos alpha proportional to h by a, cos beta proportional to k by b and cos gamma proportional to l by c. Therefore the direction cosines of the normal s vector are proportional to h by a, k by b and l by c respectively. Hence we conclude that s vector is normal to the family of HKL planes. Hence we conclude that the information we get from this region, that hence we conclude that S vector, that is CD, which is represented by CD vector in figure 1, that S vector is normal or perpendicular to the family of HKL planes, is normal to the family of HKL planes, and if a small d be the distance or spacing between two adjacent planes of a family HKL, then we have d equals to a by h into cos alpha. अगर d हम सपोज कर लेते हैं, स्पेसिंग है, डिस्टेंस है बिटवीन टू एडजेसेंट प्लेन्स, दो सटे हुए प्लेन्स का फैमिली, मतलब एचकेएल फैमिली का जो दो सटा हुआ प्लेन्स है, टू एडजेसेंट प्लेन्स है, उसके बीच का डिस्टेंस अगर डी मान लेते हैं, डी सपोज कर लेते हैं, तो उस सिचुएशन में क्योंकि cos अल्फा वेरीज एज h by a, so we can write d equal to we can write d equal to a upon h into cos alpha, d equal to a upon h into cos alpha, and it will equal to d the common distance between two adjacent planes of a family HKL. So we can write d equal to a by h alpha, a by h into cos alpha बराबर b by k, cos beta proportional to k by b है, इसलिए d equal to k by b into cos beta, क्योंकि हमने d स्पेसिंग ले लिया है, डिस्टेंस ले लिया है बिटवीन टू एडजेसेंट प्लेन्स, किसी HKL फैमिली के टू एडजेसेंट प्लेन्स के लिए हमने स्पेसिंग, कॉमन स्पेसिंग डी ले लिया है, इसलिए डी इक्वल टू ए बाई एच इंटू कॉस अल्फा, एंड इट विल ऑल्सो इक्वल टू बी बाई के बराबर है बी बाई के इज इक्वल टू बी बाई के कॉस बीटा, एंड इट विल इक्वल टू ऑल्सो इक्वल टू सी बाई एल इंटू कॉस गामा, सी बाई एल इंटू कॉस गामा. So from any of the equations 7, that is from either from 7a, 7b, 7c, that is from any of the Laue equations, we can obtain in place of a by h cos alpha we can write d. So suppose from equation in the first Laue equation, in place of a अपॉन h को अगर RHS से 7a इक्वेशन 7a फर्स्ट Laue इक्वेशन के RHS से LHS में लाया जाए, a by h cos अल्फा की जगह क्या लिख सकते हैं, d लिख सकते हैं, तो 2d sin थीटा इज इक्वल टू h को हमने डिनोमिनेटर में लिया है, तो ये केवल बचा RHS में n लैम्डा. सो फ्रॉम एनी ऑफ
the Laue equations, sorry, that is from either from 7a or 7b or 7c. We have 2d, we have 2d's, we have 2d sin theta equals to n lambda. All three equations से same result obtain होगा, and suppose it is final expression which is the Bragg's law for X-ray diffraction from a crystal 2d sin theta is equal to n lambda, जिसे हमने Laue equation से obtain किया. And suppose it is equation number d equals to a by h cos alpha is equal to b by k cos beta and is equal to c by l cos gamma, जो हमने कॉमन डिस्टेंस लिया है या सेपरेशन लिया है, डी स्पेसिंग लिया है स्मॉल डी, टू एडजेसेंट प्लेन्स ऑफ ए फैमिली ऑफ एचकेएल प्लेन के लिए. तो इसे इक्वेशन 8 सपोज कर लिया जाए, जिसके हेल्प से मैंने इस इक्वेशन का 8 का जो स्पेसिंग डी इक्वल टू जो स्पेसिंग डी टू एडजेसेंट प्लेन्स के बीच में है किसी फैमिली ऑफ एचकेएल प्लेन के लिए, तो इस वैल्यू को अगर इक्वेशन 8 को अगर यूज किया जाए इक्वेशंस 7a 7b एंड 7c में, any of the three Laue equations we can obtain this relation 2d sin theta equals to n lambda, and this is the final expression. It is equation number 9, and this is Bragg's law or Bragg's condition for X-ray diffraction from a crystal. This is Bragg's law. Bragg's law for diffraction. Bragg's law for diffraction from a for X-ray diffraction from a crystal. So this is Bragg's law, which is given by 2d sin theta is equal to n lambda, which is the final expression given by equation number 9, which we have obtained from the Laue equations for diffraction of X-rays from a crystal. Now this video is completed. Thanks all of you for watching my YouTube channel, Physics Quantum Classes.